Hello and welcome everybody. Welcome back to my channel When Humanities is Life. In our legal studies series, we are covering the entire syllabus of class 12 legal studies. I've already uploaded the video on judiciary and the law of property. उनके सारे जो notes है, the PDF version of the notes are uploaded in part 1 of all the chapters. सब आपको description में मिल जाएंगे and I don't think you will have any problem in that. Today in this video, we are starting with the law of contracts. इंडिया में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है दे आर ऑल गवर्न बाय द ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. अब हिंदी में कॉन्ट्रैक्ट को अनुबंध भी कहते हैं. लेट्स डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट. एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट्स गिवन इन सेक्शन 2 पार्ट H ऑफ द ICA 1872. अब देखिए, हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. Agreements which creates a legal relationship are to be treated as a contract, and agreements must meet certain criteria, 5 criteria, in order to be treated as a contract. पहले तो consideration, there should be a consideration as in something in return. The parties to the contract must be competent. The people, they should be more than 18 years of age. The person should be of a sound mind, should not be disqualified by any law in force. फिर consent to enter into an agreement, it must be free. It should not be forced upon the parties. The contract should be for a lawful object. It should not be illegal. And 5th point, it should not be void by any law. Intention and mindset to enter into a contract should always be there. अब इस पॉइंट में हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ में, जो कि है बेल्फर वर्सेस बेल्फर. इट्स अ लीडिंग इंग्लिश केस लॉ जहाँ पे द वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ वाज इन क्वेश्चन. क्या हुआ था? ए कपल वेंट टू इंग्लैंड फॉर वेकेशन एंड द वाइफ फेल इल. डॉक्टर advised her to take rest, and meanwhile when the leave was over, the husband came back to Ceylon where he was employed. Now the husband promised to send 30 pounds to the wife every month for her treatment. Because of some misunderstandings and some issues between them, the husband stopped sending the money after some days. अब wife ने क्या किया? Mrs. Belfor approached the court for recovering her 30 pounds for her payment. कोर्ट में क्या कहा कि ये जो agreement था between Mr. and Mrs. Belfor to send 30 pounds to her, it was a purely moral obligation. कोई legally binding कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की इंटेंशन या फिर माइंड सेट कुछ भी नहीं था. इसीलिए वी कैन नॉट ट्रीट इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट. इट्स सिंपली अ ऑब्लिगेशन. मतलब मिस्टर बेल्फर शुड हैव सेंट 30 pounds, बट वी कैन नॉट सू हिम फॉर डूइंग सो, राइट. फिर हम आते हैं मेकिंग ऑफ एन एग्रीमेंट जनरल प्रिंसिपल्स. कुछ प्रिंसिपल्स है ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आपके पेज 38 की डायग्राम से लिया गया है. यहाँ पे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट बिटवीन पार्टीज, इट शुडंट बी फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन रेमेडीज एंड डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी. ये सब कुछ एक एक टॉपिक्स है जो कि हम धीरे धीरे कवर करने वाले हैं. वंस वी कंप्लीट एवरीथिंग, लेट्स कम बैक हियर इन दिस इंडेक्स एंड सी इफ वी हैव डन एवरीथिंग और नॉट. द फर्स्ट थिंग अबाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट इज द ऑफर. क्या है ऑफर? When one person signifies to another his willingness to do or not to do certain things, it's called an offer. I want to do or not to do something, and I am communicating this to another person. Here I am the offerer and the other person is the offeree. अब ये जो acceptance है, what is it? Assent or consent given to an offer. I have made an offer. ठीक है कि I want to sell my land to you. Suppose I want to sell my garden to B. That's my offer. अगर B मेरे इस offer से सहमत है तो B will give me assent or consent. That's the acceptance. और ये जो acceptance है, it has to be communicated back to me. It's a must. ठीक है? ये जो offer है, ये जो assent है, acceptance है, सब कुछ must be legible, must be clear and must be definite. Otherwise, it's invalid. And here, you can give this in your answer too.
Offer plus acceptance is equal to an agreement. It should be clear and definite. At this point, we come to an important case law. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ऑफ 1893. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है. क्या हुआ था? द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वॉज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्मोक बॉल मेडिसिन, एंड दिस मेडिसिन, इट वॉज क्लेम्ड, कैन क्योर इन्फ्लुएंजा completely. अब ये जो कंपनी थे, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इट क्लेम दैट जिसे भी ये मेडिसिन 15 डेज तक यूज़ करने के बाद भी इन्फ्लुएंजा होगा, we will give them a reward of £100 if such a situation arose at all. And for paying the reward, £1,000 was deposited in the Alliance Bank for paying the reward. Now, Mrs. Carlyle, her name was Mrs. Louisa Carlyle, she brought the medicine, used it for 15 days, and still got fresh episodes of influenza, and she sued the company for her reward. अब कंपनी ने क्या कहा? It gave 3 arguments to defend itself. First of all, they said that there was no intention to create a legal relationship. The advertisement was only meant to boost the marketing of the smoke ball medicine. फिर the offer cannot be made to any person. मतलब एक ऑफर को हम दुनिया से तो ऑफर नहीं कर सकते ना, इंसान से करना पड़ेगा. So the third thing was the acceptance by the offeree. Mrs. Carlyle ने जो ये accept किया, that was not communicated back. I already mentioned that acceptance must be communicated. If not, then it's invalid. यही सारी चीज़ें हमारे कंपनी ने कहा. But हमारा जो decision था कोर्ट का, the court dismissed all these things and said that since कंपनी ने ये £1,000 अलायंस बैंक में डिपॉजिट किया, इसीलिए ये legally binding है. We can understand that there was clearly an intention on the part of the company to create a legal relationship. And in this case, it was a general offer. It's perfectly valid. There is no need to communicate acceptance of the offeree in this case. Merely fulfilling the terms, merely fulfilling the directions of the advertisement is enough to create the contract. हो गया. Now we come to the second part of any contract, which is consideration. Consideration मतलब क्या? Something in return. And consideration is a must. Without a mutual consideration, a contract is void. क्योंकि एक पार्टी ले रहे हैं कुछ भी ना दिए, and that's not right. If I'm taking something, I must give something. That's a rule of law. अब ये जो hard and fast rule है, इसका एक exception भी है. Registered and written instrument out of natural love is not void. Like for instance, हमारे जो parents हैं, when they are old, at the end of their lives, they give us their money, whatever they have earned, or their jewelry, property, whatever they have. And that is because of their natural love. तब क्या हम उन्हें पे करते हैं? That you are giving me so many things, so let me pay you for that. No, we don't. Here we are not giving any consideration, but still is valid. It's a gift. हमने property के chapter में किया, at the end, gift. Similarly, this contract out of natural love is not void. Consideration need not be adequate, but it should be real. It should not be illegal, immoral, or opposed to public policy. There is a case law here, Durga Prasad versus Baldw. It was in 1880 that it was fought. क्या हुआ था यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिक्वेस्ट पे हमारे जो प्लेंटिव थे, प्लेंटिव मतलब जो कि कंप्लेंट लॉन्च किए हैं फॉर्मली कोर्ट के साथ, दुर्गा प्रसाद जो है यहाँ पे जो प्लेंटिव है, he constructed some shops on the request of the district collector and he gave the shops for rent. क्योंकि ये शॉप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेटेड थे, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों से सजाए गए थे, इसीलिए द प्लेंटिव वांटेड अ 5% कमीशन फ्रॉम द पर्सन हु वाज टेकिंग द शॉप ऑन रेंट. अब डिफेंडेंट जो थे हमारे बलदेव, मिस्टर बलदेव कुड नॉट पे द 5% कमीशन. ठीक है, एंड द प्लेंटिव sued बलदेव फॉर दिस. कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो शॉप कंस्ट्रक्टेड थे, जो डेकोरेशन किया गया था, इट वॉज डन एंटायरली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड नॉट ऑन द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट. बलदेव ने तो नहीं कहा था करने के लिए. देन वाई शुड ही गिव कंसिडरेशन? दिस कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड. सब्सिक्वेंटली कोई ऐसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है टू पे कमीशन.
Now let's discuss two important things in this regard. पहले तो capacity to contract and then consent. कौन contract कर सकते हैं? That's the question. Any person who is more than 18 years of age, the person should have a sound mind, should not be disqualified by any law in force, and the person should have a rational judgment. तभी ऐसे एक इंसान can enter into a contract. And who are the ones who are disqualified? The ones who are minors, below 18 years of age, persons having an unsound mind, idiots, lunatics and drunkards, and persons who are disqualified by law. जैसे कि alien enemies, foreign sovereign, insolvents मतलब the ones who are bankrupt, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई पैसे नहीं है. They are the ones who are insolvents. Convicts जो कि accused है कुछ क्राइम करने के लिए, कॉरपोरेशन, बैरिस्टर्स, दैट्स इट. जो बैरिस्टर्स और कॉरपोरेशन है, बैरिस्टर्स मतलब लॉयर्स, दीज आर नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, दे आर एप्लीकेबल इन यूके, दे वेयर एट लीस्ट. ठीक है, हो गया. फिर हम आते हैं कॉन्सेंट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. कॉन्सेंट क्या है? व्हेन टू पर्सन्स अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, इट्स कॉल्ड कॉन्सेंट. एंड दिस कॉन्सेंट मतलब ये जो assent है, it should not be taken through coercion, undue influence, misrepresentation, fraud or mistake. अगर ऐसे लिया गया है हमारे consent, then it can be revoked. It's not right and the contract would be invalid then. ठीक है, बस इतना ही आज के लिए. Meet you in the next video. By then, stay tuned. Bye bye.